हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सी प्लस प्लस के साथ करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ प्रोसेस बिकॉज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन और अ रनिंग प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस एंड वी हैव बफर and we have input device and output device. So first we will see what is input device. So if we take input from the keyboard, it will be treated as a standard input devices. And if we want to print something on console or monitor, it will be treated as a standard output devices. So guys, हमने यहाँ पे C in H और C out H हमने यहाँ पे दिखाया. So यदि हमें if we want to take input from the keyboard, so हम लोग C in use करते हैं. And if we want to print something on console or monitor, तो हम लोग यहाँ पे C out use करते हैं. So let us suppose आपने कीबोर्ड से आपने 20 टाइप किया. So आपका जो कंसोल और मॉनिटर है उस पर आपको 20 प्रिंट होता हुआ आपको दिखेगा. सो गाइस, ये जो आपको प्रोसेस आपको दिख रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, ये आपको जितना आपको फास्ट और जितना स्मूथ दिख रहा है, रियली में ये इतना फास्ट और स्मूथ होता नहीं है. सो इन ऑर्डर टू टैकल दिस इशू, वी हैव बफर. बफर इस इशू को रिजॉल्व करता है. सो बफर की वजह से हमें जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कंसोल पे प्रिंट होता हुआ दिखता है, सो वो इतना फास्ट होता नहीं है बिकॉज दिस टू डिवाइसेस आर रियली स्लो. बट विद द हेल्प ऑफ बफर वो हमें इतना फास्ट और इतना स्मूथ प्रोसेस होता हुआ हमें दिखता है. सो आई होप आपको ये फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको समझ में आया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ सी प्लस प्लस हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट. सो द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम. So a stream is basically a flow of data. So with the help of a stream, we can read the data. With the help of a stream, we can write the data. So यदि आपने C language आपने पढ़ा होगा, so if we want to take input from the user or we want to take input from the keyboard, so हमें वहाँ पे scanf यूज़ करना होता है. If we want to print something on console or monitor, so हमें वहाँ पे printf यूज़ करना होता है. But in C language, वहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमें मेंशन करना होता है. सो फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या होता है कि यदि आपका डेटा टाइप इंटीजर है, सो हमें वहाँ पे परसेंट डी यूज़ करना होता है. यदि हमारा डेटा टाइप फ्लोट है, सो हमें वहाँ पे परसेंट एफ यूज़ करना होता है. यदि हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग है, सो हमें परसेंट एस यूज़ करना होता है. So the entire process of taking input or printing something on monitor in C language is very complex as compared to C++. So with the help of a stream, it becomes really easy because in C++, in order to take input from the keyboard, there's only scene, so simple syntax in order to, and if you want to print something on monitor or console, there's cout and nothing else. So a stream is implemented by multiple classes and objects in a standard library. So example classes are iStream for input a stream, if a stream for input a stream from files, OStream for output a stream, off a stream for output a stream from files. And we have objects also. So scene is object of iStream. Why object of iStream? Because iStream for input a stream. And if we want to take input from the user, हम लोग scene use करते हैं. So scene is an object of iStream used for input. Cout, object of OStream. Why OStream? Because OStream is a for output stream. So if we want to print something on console or monitor, so हम लोग cout use करते हैं. So it's used for output. So it's object of OStream. Guys, अब हम लोग scene and cout को use करके एक प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपने देखा कि scene is a object of iStream, cout is a object of OStream. एंड दिस इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर जो कि हम लोग cout के साथ यूज़ करते हैं यूज टू प्रिंट द आउटपुट. एंड दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो कि हम लोग सीन के साथ यूज़ करते हैं यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम यूजर इनपुट. चलिए एक प्रोग्राम रन करने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीन एंड cout. फर्स्ट डिक्लेयर टू नंबर्स एंड print one statement like enter two integers for next line and scene x and y, and now print the sum of
these two integers, and that is x plus y. And now let's run the program. So guys, as you can see, इंटर टू इंटीजर्स जो कि हमने एज अ सी आउट हमने प्रिंट करवाया था. So इंटर 23 इंटर 3. So as you can see, some of these two integers is, now let's run the program, and 23 and 3. So you can see some of these two integers is 26. So guys, there's two ways to run the program. First way is this one, and the second way is enter two integers. So like 23 space 3. Some of these two integers is 26. And the first way, जैसे कि आपने देखा, 23 enter 3 enter. Some of these two integers is 26. What is the basic difference between backslash n and indel? So backslash n, it simply moves the cursor to the next line without flushing the buffer. What does it mean without flushing the buffer? So flushing the buffer means it ensures all the data in the buffer is sent or flushed to the output device immediately. But what is indel? It is a way to end a line of output. It's not only adds a new character to the output, but it also flushes a, or you can say send a clears the output buffer. So this ensures that whatever you have printed so far appears on the screen immediately. So if you need to ensure that your output appears immediately, use endl. But if you are outputting a lot of data, it can slow down your program because it forces a flush every time it's used. So this is because flushing takes time. So you can use backslash n to improve the speed of your program by reducing the number of unnecessary flush. So if you are if you simply wants to move the cursor to the next line without flushing, so you can use backslash n. So आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस. सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया, so please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.